Okay, assalamu alaikum. Sorry for the interruption. The interruption was due to interruption in power. And then, okay, so we were discussing basically the implementation of this class hierarchy. And in this hierarchy, we first implemented the account class, and then we extended it and derived another class, the savings account class, from this class. Okay, so there's one more class that remains, the current account class. Now, the current account class is a little different than the savings account class. Again, it has an additional attribute, and that attribute is the fee that will be charged per transaction. In fact, per debit transaction, whenever you want to withdraw money from your account, so that is considered as a service provided by the bank. So the bank will charge you some fee. Why would it charge a fee? Because in principle, the bank should not be investing your money in the current account into its businesses, since it is not making any money out of your money. So it will charge you fee for providing you services. That is the basic idea. So it will charge you some fee. So the fee would be a private attribute of the current account class, and this is an additional attribute, like it is inheriting from the account class, and the account class has this attribute balance, and the current account class has one additional attribute, that is the fee. And there is some change of behavior as well. Now, if you look at this function, it is the same function debit as it is in the account class. Okay, so the two functions are the same, like they will do the same thing. But here, whenever in the account class, whenever we debit the amount, so we just debit the amount that we want to withdraw. Okay, but in the current account class, we are not going to just debit the amount, we are also going to charge some fee to the user. Okay, so whenever the user goes to some ATM or goes to the bank with a check and wants to withdraw some money from the account, the user will be charged some additional fee. That is the difference between the debit function in the current account and the debit function in the account function. Okay, in the account function, there is no charging of extra fees. So if you want to withdraw 5,000, you just withdraw 5,000. But in the current account class, you cannot just withdraw 5,000. You will withdraw 5,000, and the bank will deduct 15 rupees or 10 rupees or whatever amount it suggests. That amount of fee will be charged from your, or deducted from your account per transaction. Okay, so now if you do something like this, this is called overriding. Here we have a debit function in the account class, and in the derived class we change the behavior of this debit function. Okay, we modify the way this debit function works. This is called overriding. You can do it. You can have the same function redefined in the child class. Okay, and I gave you an example of this, and that example was when we talked about Suzuki Mehran. So you press the same accelerator pedal, but in the EFI version of it, there is an EFI system, electronic fuel injection system, that is activated. And in the simple plain old carburetor based system, there is a mechanical system which basically increases the richness of the air fuel mixture that goes into your engine. Okay, so this is the difference. The interface is the same, the accelerator pedal is the same, but what happens behind the scenes, that is different. Similarly, here we are not changing the interface. The function name remains the same, the function's return type remains the same, the function's argument and its type remains the same, but the way it behaves, that basically changes. So let us do this as well. So we are going to override the debit function. Now, if you look at the debit function here, this is the debit function in the account class. We are going to rewrite this debit function in the current account class. Okay. So this is the, by doing this, we are suggesting to the compiler that we are going to rewrite the debit function. We are going to override the debit function in the parent class, that is the account class. Okay, so now we will have the current account object. Any current account object, it will have basically two debit functions. One debit function
would be the one that it would inherit from the account class, and the other debit function would be the one that it would be its own, that it is overriding. Okay, so it will have two debit functions. Now let us implement this debit function. Okay, so let us implement this debit function. This debit function is basically the current account class's debit function. So this is the current account class, and this is its debit function. Okay, this is its debit function. Okay, so we will write the code for it, but before that we also need to specify constructors here. Okay, so we need to have some constructor, the default constructor, and then we need to have the overloaded constructor. Okay, and then we need to have the overload. So overloaded constructor will have two arguments. One would be the initial balance, and the other would be the fee that will be charged per transaction. Okay. Okay. Now let us implement these constructor functions as well. Okay. So first one is the default constructor. And second one is the overloaded constructor. So in the default constructor, we won't do anything except for printing this message. Okay, so we'll print out this message, current account and current account. Okay, so that would basically like help us understand that this function has been invoked or called. We cannot initialize the current balance, the balance attribute here. The balance attribute will be automatically initialized when this function, this particular constructor function, the default constructor function for the current account class, it will automatically invoke the default constructor for the account class, which is its direct base class. So that will help us initialize the balance to its default value, that is 0. Okay, I guess it was 0. We set it to 0. Yes. Here we can initialize the other property. The other property or attribute is the fee. So we can initialize the fee. So let us initialize this to 0 as well. Okay, let us initialize this value to 0 as well. Let us keep it to 0. Now, why keep it to 0? Like, we can assign some other default value, but if you go to a bank, like, there are plenty of types of account classes as well. If you recall, we looked at this particular hierarchy. Okay, so now we have the salary account and the business partner account, and these accounts, salary account, say for example, it does not have any fee per transaction. Okay, and the business partner account does not have any fee per transaction. So by default, keep the value of the fee attribute 0, but you should have, the important thing is that there should be a fee attribute. Once you decide, or the bank decides to charge some fee per transaction, so you will have that attribute. But you can like assign it the value 0 initially, and if there is a specific type of account where like you want to charge some fee, so you can initialize that value to some non-zero value, the value of the fee attribute to some non-zero value. Okay, like in this case. So if we want to initialize the value of fee to some non-zero value, so this constructor can be invoked. Okay, so this is the overloaded constructor. Let us write this one. So this is the overloaded constructor.
it receives two double arguments. One is the fee, so fee you can assign here, fee, let us call it here as transaction fee, okay, transaction fee, okay, or service charges, or you can name it, give it any name. So fee is equal to transaction fee, okay, fee is equal to transaction fee. Now this fee is the attribute of the current account class, this particular attribute, okay, and this is the argument that the constructor receives. How do we initialize, how do we pass this value to the so that it can be used to initialize the balance of the account? So again we need to pass it by explicitly calling the overloaded constructor of the direct base class, that is the account class, and passing this argument to the account to the overloaded constructor of the account class. So you can do this using the member initializer list, okay. So here you can say init balance, okay. So I hope like you know these things. We have discussed these while we were discussing the savings account class. Now let us get back to the current account class. Now how would the current account class behave? ठीक है, अच्छा अब इसमें दो तरीक़ेकार हो सकते हैं. एक करंट अकाउंट क्लास का जो डेबिट फंक्शन है उसमें ये होगा कि आप जब बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो आपको कुछ फ़ी चार्ज किया जाएगा. अब आप दो तरीक़ेकार कर सकते हैं. वन कि आप अमाउंट जब विड्रॉ कर लें तो फिर फ़ीस डिडक्ट करें. दूसरा कि आप देखें कि बंदे के पास अगर फ़र्ज़ कि वो 5,000 विड्रॉ करना चाहता है और अकाउंट में बैलेंस भी 5,000 है, तो फिर आप उसको विड्रॉ ही ना करने दें. क्यों? क्योंकि 5,000 उसका बैलेंस है और 15 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ट्रांजैक्शन फ़ी पड़नी है, तो उसको 5,000 15 अकाउंट में चाहिए, ठीक है. सो ही और शी नीड्स 5,015, वो है नहीं तो आप विड्रॉ ही ना करने दें. लेकिन बैंक्स यूजुअली ऐसा काम नहीं करते. ये दिस इज़ क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट पोलाइट और कर्टियस और गुड कस्टमर सर्विस. तो वो क्या करेंगे, वो उसको अलाउ कर देंगे टू विड्रॉ द अमाउंट और उससे फ़ी डिडक्ट कर देंगे बाद में. तो अगर उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है तो वो फ़ी डिडक्शन के बाद वो मनफी में हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है. बट बैंक्स जो हैं दे ट्राई टू अर्न गुडविल इंस्टेड ऑफ कि आप 15 रुपयों की खातिर एक कस्टमर को नाराज़ कर दें. तो वो गुडविल उनके लिए ज़्यादा कीमती है बनस्बत इन 15 रुपयों के अगर वो ना पे करें, ठीक है. सो हाउ वुड दिस वर्क देन? तो आप इस तरह करेंगे कि डेबिट अब किस तरह करेंगे, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है. अब डेबिट में क्या होगा, हम बैलेंस को चेंज करेंगे. तो बैलेंस को हम यहाँ डायरेक्टली तो नहीं चेंज कर सकते. क्यों नहीं चेंज, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बैलेंस हम ये काम नहीं कर सकते कि इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन बैलेंस, ठीक है, तो आप क्या करें, आप ये काम करें कि बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, ये काम करें. तो ये काम हम नहीं कर सकते यहाँ पे. क्यों? क्योंकि बैलेंस इज़ अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द अकाउंट क्लास. वी कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली हेयर इन द करंट अकाउंट क्लास, ठीक है. तो आई गिव दिस क्वेश्चन, वंस आई गिव दिस क्वेश्चन as part of an exam, in an exam, ठीक है. So I asked the students to write this program, and most of them, like, they would make these very simple mistakes in which they would try to access the private data members of the base class in the derived class. ये आप नहीं कर सकते, ठीक है. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से. अच्छा जी, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप ये करेंगे, ठीक है. अब अकाउंट अगर डेबिट हमने करना है तो हम अकाउंट क्लास का जो डेबिट फंक्शन है हम उसको कॉल करेंगे और उसको कहेंगे कि जी आप ये अमाउंट डेबिट करें अकाउंट में से, ठीक है. अगर तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है तो फिर हम उसमें से फ़ी भी डेबिट कर देंगे. अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर हम उसमें फ़ी नहीं डिडक्ट करेंगे, ठीक है. तो इसलिए हमने ये उसकी रिटर्न टाइप बूल रखी है. ये जो आपके पास ये जो डेबिट फंक्शन है
अकाउंट क्लास का, इसकी रिटर्न टाइप हमने भूल रखी, उसका वहाँ पे भी हमें फ़ायदा होता है। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे? तो ये यूँ करेंगे। अब देखें ये जो करंट अकाउंट क्लास है ना, इसमें दो डेबिट फंक्शन है। करंट अकाउंट क्लास में दो डेबिट फंक्शन है। एक इसका अपना डेबिट फंक्शन है ये वाला, एक इसने जो इनहेरिट किया। अब आप चाहते हैं कि जो इनहेरिट किया इसने हम उसको कॉल करें, ठीक है। अपना वाला तो इसका भी बना ही नहीं है तो उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जो इनहेरिट किया हुआ है इसने उसको कॉल करना चाहते हैं। वो कैसे कॉल करेंगे? उसको डेबिट के नाम से कॉल करेंगे या किसी और तरीके से? अच्छा, तो हम उसका पूरा नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको कहेंगे कि ये अमाउंट है, ये डेबिट कर दो। अगर उस फंक्शन ने हमें ट्रू की वैल्यू रिटर्न की तो हम फिर फ़ी भी डेबिट कर लेंगे, वरना नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हम ये काम करेंगे, इफ़ इस क्लास ने जो अकाउंट क्लास का डेबिट फंक्शन इनहेरिट किया है हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसको यूं कॉल करेंगे, उसका पूरा नाम यूज़ करेंगे, वो अकाउंट क्लास का डेबिट फंक्शन है। तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम अकाउंट क्लास से जो डेबिट फंक्शन इनहेरिट हुआ है हम उसको कॉल कर रहे हैं और उसको ये अमाउंट पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसने हमें ट्रू की वैल्यू रिटर्न की तो यहाँ मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इज़ इक्वल टू ट्रू, इफ़ इट इज़ इक्वल टू ट्रू, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर मैं यूं लिखूँ ना कि दिस इज ऑल्सो फाइन इफ़ अकाउंट डेबिट, इसकी रिटर्न टाइप बूलियन है तो या ट्रू हो गया फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या हो, अगर ट्रांजैक्शन हो गई है तो फिर हम फ़ी भी डिडक्ट करेंगे, ठीक है। फ़ी कैसे डिडक्ट करेंगे? सो अकाउंट डेबिट, हम उसमें से फ़ी डिडक्ट कर रहे हैं कि जी फ़ी भी डिडक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दें कि हाँ जी ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो फिर क्या करें? फिर आप कुछ ना करें, सिंपली रिटर्न फॉल्स। अगर वो ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं हो सकती कि अमाउंट ज़्यादा है और बैलेंस कम है तो just simply return false. Okay, so this is how the current accounts debit function would work. Now this is different, slightly different than the debit function of the account class. This is what overriding is all about. आप child class में base class के किसी function की functionality को change कर देते हैं, but that functionality is also available to you. वो भी आपको available होती है, आप उसको भी use कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो आपके पास क्लास है ना, ये जो करंट अकाउंट क्लास है, इट हैज़ टू डेबिट फंक्शंस। वन डेबिट फंक्शन इज इट्स ओन, द अदर वन इट इनहेरिटेड फ्रॉम द अकाउंट क्लास। अब आए ज़रा इसको चेक करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। सो लेट अस क्रिएट, अच्छा मैं इसको फिर से इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट हो गया। अच्छा जी, एंड आई कमेंट दिस थिंग आउट, इस पुराने वाले कोड को मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि आप सिर्फ करंट अकाउंट क्लास का जो बिहेवियर है उसको देख सकें, ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट क्लास, अब हम यहाँ पे सिंपल ये करेंगे कि इसको मैं करंट अकाउंट बना दूँगा, ठीक है। तो दिस वुड बी करंट अकाउंट S1, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फीस है तो ये हम कर देते हैं कि ये दिस इज़ 10 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन, ये फ़ीस है। और बैलेंस को चलें हम स्टार्ट ले लेते हैं 10,000, ठीक है। अच्छा, 10,000 से स्टार्ट ले लिया। सो बैलेंस ऑफ S1 विच इज़ नाउ अ करंट अकाउंट ये है। फिर उसमें से हम 25,000 क्रेडिट करते हैं, फिर डेबिट करते हैं, और डेबिट के बाद फिर हम बैलेंस चेक करते हैं। और अच्छा, ये काम तो अब नहीं कर सकते क्योंकि नाउ इट इज़ अ करंट अकाउंट ऑब्जेक्ट, तो आप कैलकुलेट इंटरेस्ट वाला काम नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, लेट अस बिल्ड एंड रन। अच्छा, now let us correlate the output with the code. So first of all we say current account S1, and S1 matlab we are basically invoking the default the overloaded constructor of the current account class.
तो वो जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है वो पहले बेस क्लास के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को हम एक्सप्लिसिटली वो जो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट से हमने उसको इन्वोक किया है तो उसको इन्वोक किया जाता है, उसके बाद फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और इसमें हम दो काम करते हैं, एक बैलेंस को हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद द इनिशियल वैल्यू ऑफ 10,000 और फ़ी को हम पर ट्रांजैक्शन जो है उसको इनिशियलाइज करते हैं विद द वैल्यू 10, ठीक है। ये हो गया। हम बैलेंस को चेक करते हैं, वो है S1 का बैलेंस 10,000, हम फिर उसमें 25,000 क्रेडिट करते हैं तो वो 35,000 बन जाता है, जैसे कि सेकेंड उससे ज़ाहिर है। फिर हम उसको डेबिट करते हैं 5,000। जब हम डेबिट करते हैं 5,000 तो 5,000 डेबिट भी होता है और साथ में 10 रुपये हम फीस भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास बैलेंस जो है इस ट्रांजैक्शन के बाद, डेबिट की ट्रांजैक्शन के बाद ये बैलेंस रह जाता है, ठीक है। अच्छा, सो आई होप लाइक दिस इज़ क्लियर टू यू। आप लाइक इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। All we did in these two videos was to demonstrate how inheritance works in C++ by implementing this very simple example class hierarchy, ठीक है। इसको you can make it more complicated, we can add more layers to it. I'll try to demonstrate one such example, ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हों। लाइक यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक बेस क्लास है और फिर उसकी दो डिराइव्ड क्लासेस हैं। सो विल ट्राई टू हैव अनदर एग्जांपल इन विच वी हैव वन बेस क्लास एंड देन अनदर डिराइव्ड क्लास, फिर उस डिराइव्ड क्लास की फर्दर डिराइव्ड क्लासेस हैं, ठीक है। सो आई होप यू नो व्हाट इज ए रिलेशनशिप इज और व्हाट इनहेरिटेंस इज एंड हाउ to implement it in C++, ठीक है। I'll post the code on the class website as well, and I'll also record another lecture, and that would be related to polymorphism, which is again a closely related concept. तो polymorphism को cover करने के बाद हम जाएंगे toward has a relationship. Again, that is very simple, has a relationship or multiple inheritance. Multiple inheritance we'll discuss just for the sake of completion, otherwise practically we won't use it that much, ठीक है। Okay, see you later.